जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद इस हफ्ते की एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस पिछले हफ्ते जो टर्की और सीरिया में डिज़ास्टर हुआ है उसमें लोअर मेनलैंड की सब कम्युनिटीज़ जो हैं वो आगे निकल कर आई हैं, और ख़ास तौर पर टर्किश कम्युनिटी और फातिमा ज़हरा जो हेल्पिंग हैंड वाले, इन्होंने भी यहाँ पे बहुत जो वॉलंटियर्स हैं उनके खाने का इंतज़ाम किया गया है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो हैं उन्होंने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि डोनेशंस आ रहे हैं यहाँ पे, और न्यू आइटम्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये यहाँ पे इनके पास बहुत कम दिन है इस वेयर हाउस का, तो अगर किसी के पास वेयर हाउस भी है और जो वो महीना 20 दिन महीने के लिए कोई डोनेट करना चाहता है ताकि वो जो वेयर हाउस है उसके बिटवीन द लीजेस अगर कोई जगह खाली है तो वो भी पता लगनी चाहिए, और वो भी हम इनको बता देंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंतखाब अहमद को 7782282714 पर। नाज़रीन, इसके साथ साथ इस हफ्ते के प्रोग्राम में दो बड़े वाक़यात, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ और अमजद साहब की डेथ जो है वो भी एक लॉस है कौम के लिए। और ख़ास तौर पर जो अमजद हैं उन्होंने माशरे में लोगों की रहनुमाई करने के लिए बहुत कुछ काम किया है। जनरल मुशर्रफ को भी इसलिए हम करेंगे कि वो कम अज़ कम पाकिस्तान में जिस तरह से जो हालात थे 9/11 के वक़्त, उसमें पाकिस्तान फिर भी कुछ सेव हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। 85,000 लोगों की डेथ जो है वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इतने सारे जो टर्मोइल हुए हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकली, और उनको जो है वो बस कोई साहब अकल ही आ जाए उस मुल्क में जो कि उसको लीड कर सके। तो पाकिस्तान के लिए हम हमेशा दुआगो रहते हैं, और इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं वो टर्किश लोगों के हैं और सीरिया के लोगों के लिए हैं। उनके लिए नई अशिया लेकर आप यहाँ पे पहुँचें, और वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस हफ्ते एक और प्रोग्राम हुआ है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी अपना एक प्रोग्राम किया, हम उसकी भी झलकियाँ दिखाएंगे। लोअर मेनलैंड में जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं और रिसेंट हम आपको उसकी झलकियाँ दिखाते रहेंगे। देखते रहिए वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are at 580 Industrial Avenue. Here all Turkish High Commission, Turkish Airline and the Turkish community having this warehouse and collecting donations from the Vancouver people and sending to Turkey for the people in need. And thank you very much Dil Apna Pakistan Intikhab Bhai for coming here and shooting all these activity which is happening here. And I really appreciate whoever is participating in this in any way possible. This is a disaster and we all need to come out and help these people, inshallah. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे टर्किश एम्बेसी और कौंसलेट जनरल और बिजनेस पीपल ने मिलकर यहाँ पे टर्किश और सीरिया के जो ज़ल्ज़ले से ज़दगान हैं वो उनके लिए यहाँ पे फूड और एवरीथिंग लाइफ नेसेसिटीज आर बीइंग कलेक्टेड हियर by the lower mainland community, but I see here Edmonton people have sent here, and with all this effort Turkish Airline is taking all this food and help and clothing, shoes, everything. With me is Dukan and brother Baha, and they will say something in English, their efforts what they are doing. So Dukan, you can tell what's your organization or group of people are doing here? So we are a group of volunteers here right now as community. We're seeking blankets, tents, sleeping bags, medical kits, and anything about babies and children stuff like food, clothing,
but they have to be brand new, please. Yeah. It's pretty important for the Important, kids. yeah. Because they're vulnerable right now. That's right, yeah. That we have to send help. So we have different stations in here. We have clothing stations, we have food, hygiene stations, medical stations. We put in different boxes, we label them. Brother Baha, you want to say something about? Yeah, I would tell all the brother, everyone, they help us very well. Thank you very much, all brother and sister. They are here to like every day to 9 to 9. Everybody they suffering effort to work. I can tell everybody thank you very much. They are helping us. Thank you very much. Yeah. Since the volunteers are working here, so we don't want to interrupt their work here. So it's work is going on. With me, brother Bilal is here. Brother Bilal, you want to say something what has been done here? And you are volunteering food from the Pakistani restaurants. They are helping us in terms of prepared food for the workers who are working here. Not workers, they are all volunteers. The volunteer workers, they are working here. So you tell me your... Actually, everybody knows Sheikh Noorjan, mashallah, and Fatma Zara helping hand. Yes. So this is his idea that we started a program for the hot meals for less fortunate people. Yeah. But since this Turkish incident happened, so we divert our efforts toward this call. That's And right. every day we are bringing food for the volunteers under Fatma Zara helping hand. All the restaurants in our community kind enough to support us. Everybody is giving like 50, 100, 200 people food every day. So which we are bringing, and mashallah is helping here in whatever way possible we can do that. So we are doing that. We appreciate for that. Actually. We're so appreciative. Thank you so much for the brothers and sisters. That's right, it's a brotherly help. And keep watching Dil Apna Pakistan, and we'll do some more coverage here. Okay, thank you. वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान बोलिए. इसमें कोई शक नहीं है वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान. The palette is organizing. We make each palette is differently. Yes. Packaging. We Yeah. check each product is the expired date or the items make the separately. Yeah. And then we put each palette is the palette number. Yeah, palette like number. In this palette, what we have. Yeah. We put it everything here. Yeah. And then we put each palette. We make the one list. Yeah, And we send those one to the with the Turkish Airlines. Then they know which area what they needed. Then they send it to each location. Oh, yeah. For example, if the one area they need baby clothes, they knows which pallet they're gonna take it. right. We make everything is organized here. The people what Yeah. they do the organize they Yeah. palletize. Yeah, palletizing. Everything is separately. Yeah. We make their job is very easily. Right, Then right. they knows which pallet they're gonna take it. Mashallah. This location is just organized and palletized center. Mashallah. And then when we finish the pallet, we put the different warehouse. MashaAllah, We put the MashaAllah. different warehouse. Then when Turkish Airlines what they needed, they tell us. We send those pallets. Yeah. So how many pallets they are taking daily? Each time they take 12 pallets. 12 pallets. Approximately 12 pallets they take. Okay. And they go to Ankara first, and then from there Go to Istanbul. Istanbul. Sorry. Istanbul. From the Istanbul, which city, what they needed, then they send They this will pallet distribute. that city. Okay, mashallah. They don't send the one product just same place. No. They just separate it from the Istanbul area. MashaAllah, MashaAllah, very good. That's the place we are Yeah. doing. And then thank you very much, you guys. Everybody, they are helping us. Thank you. We appreciate it. This is really, really helpful. Lot of volunteers. Like Yeah. around 200-300 people every day. That's have right. volunteer work here. Yeah. Very good, thank you. See, Nazreen, I want to show you here. So many pallets are already ready here, and that is something. And the best thing is they are very organized here. They are with the pallet numbers and what they have in the pallets are mostly baby items and everything like surviving. What do you call it? Everything for the to be used for the human beings. And it's a big warehouse where
with lots of capacity, and volunteers are working. And see, look at this. And people are open-heartedly. They have brought the things. I am in a warehouse area where the things are already boxed, and the boxing is happening right over there. नाज़रीन, ये असेंबली लाइन की तरह ही यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे पैक हो रहे हैं, और उधर मैंने दिखाया था कि किस तरह से जो सॉर्टिंग हो रही है चीज़ों की, और यहाँ पे जो हैं वॉलंटियर्स, they are well, and everything is so much organized with the numbers and everything. This is how it should be. This is how it should be. Yeah, people are working hard. Yeah, it's ongoing. Turkish community of Lower Mainland has come up with such a great idea to help their brothers sisters back home in Turkey and in Syria and wherever help is needed. These countries are devastated with terrible earthquake, and too much lives have been lost there. Kids are orphans, and it's a disaster there. Yeah, Nazreen, these are the boxes which are all ready to go, and they are, oh, mashallah. Thank you. You guys are doing very good job. And see, everything is separately packed here. Yeah, all the kids' diapers. Yeah, diapers, blankets. Yeah, blankets. Yeah, Separate it, label it. yeah. The best thing is the labeling, and everything is going in a way that, inshallah, that will be a good effort, and people who are suffering from this disaster can restart their lives again. And the thing I like here is the volunteers. They are working hard here. They are working very hard, and they need to do. They are doing more, and the community has come back here. They are all working very hard. You see the actions. Actions are so fast, you won't believe that. Look at this. Look at this. How they are taping, and mashallah, mashallah. MashaAllah. المتوفرة لأحبتنا الأطفال، وهناك قاعدة الاجتماعات التي سوف نقوم بعمل برزنتيشن توضيحي، عرض مفصل لمشروع ICCBC، وشاكرين لكم ولدعمكم لهذه القضية. وجزء وريع من هذه القضية اليوم سوف يذهب لمتضرري زلزال تركيا وسوريا رحمهم الله. Dear brothers, dear sisters, very good morning and welcome to the ICCBC project, the Islamic Cultural Center of BC. On behalf of all the board and the team, I would like to thank everybody who came today, from volunteers to supporters, the great supporters for this cause. We're here today to be united, to build a great project for the Muslim community. BC is lacking a great presence for Muslims. Today is our day to gather to fund this project.
We seek everybody today, everybody, with no exception, to support this cause. We have prepared a lot of fun activities for all the families, regardless of the age, from kids to adults. We prepared a very fun, full banquet hall for the kids to enjoy the day. We have a very delicious food already. I can smell it everywhere, from different ethnicities, different cultures. Come and taste it. We have a big bazaar as well today, and we have our presentation center to introduce to you the dream, the project for all Muslims, a cultural center which has full facilities for everyone. Please enjoy the day. It is our day. It's Eid Festival. This is the Eid Festival where all the Muslims are united today to be together. Once again, thank you so much. Enjoy the day from 12 o'clock till 7 p.m. here at 7778 152 Street. We look forward to welcome everybody the whole day. Have a good day and we will catch you soon. Who are affected in Turkey, and we are representing here. We brought the food for all the volunteers here from Fatma Zahra Helping Hand Vancouver. We are organization here, MuslimCharity.com. So it's privilege for us to help those who are helping other people who are coming together, all the families are coming together, and as a community. So it's, God bless you too. Thank you. Thank you. नाज़रीन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं और ओनली न्यू आइटम्स आर बीन शिप्ड एंड नॉट यूज्ड आइटम्स एंड दे आर जस्ट कैटेगराइजिंग foods and clothing and pampers, medicine, whatever is needed for the people, and they are just sorting out here. इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान. So नाज़रीन, this is food. माशाल्लाह. माशाल्लाह. हाँ 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 जी माशाल्लाह. Yeah, put your faith in action, and people are really, volunteers are working here. Yeah. Yeah. We'll just put the line. Yeah. It's a food for the staff. जी नाज़रीन, ये फूड स्टाफ के लिए आ रही है और ये देखें, और काफ़ी फूड पहले भी जा चुकी है. अभी मैं अंदर से भी उसकी वो लूँगा पिक्चर्स और वीडियोस. We have a social media and TV. We right now open the live video with together, and we can show this way, everything. You know. A little announcement what you're doing and the things from your heart, because you're Couple of words will be great. Couple of words, because we want to show what's going on, because they need to this stuff, but more important, they need to give it moral. You know, we love Turkey. इंशाल्लाह जो खाना जो है यहाँ पे अभी जमा हो रहा है, और माशाल्लाह बिरयानी भी आ गई है, और माशाल्लाह ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो हैं ये खाने में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. और बिलाल भाई,
आप एक बार फिर बताएं कि अब ये किस तरह से आएंगे लोग, बारी बारी अपना खाना लेंगे? अब आएंगे इंशाल्लाह। एवरीडे यही हो रहा है कि हम फातिमा ज़हरा हेल्पिंग हैंड की तरफ से ये खाना लेके आ रहे हैं। अच्छा। हम सारे रेस्टोरेंट से कलेक्ट करते हैं, यहाँ लेके आते हैं और लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और फिर जो भी यहाँ पे वॉलंटियर भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फातिमा ज़हरा की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए लोग डोनेशंस भी दे रहे हैं, और चीज़ें भी ला के दे रहे हैं। यहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके अलावा बेबी फूड, डाइपर्स, लेडीज सैनिटरी पैड्स और फ्लैश लाइट्स, स्लीपिंग बैग्स और टेंट्स और मेडिसिन you name anything. You name anything. So these are the things which we are looking for now. And Turkish airline माशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ से लेके जा रही है। अभी लास्ट जो फ्लाइट गई है उस पर भी 20 पैलेट्स गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऑलरेडी तो ये ऐसा कॉज है कि इसमें जो जितनी हेल्प करना चाहे वो करे और अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह। ये ऐसा वक्त है कि सबको एक दूसरे की सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट करनी है। थैंक यू। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको इस हफ्ते भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके लिए जो सरगर्मियाँ हम हमेशा लेकर आते रहते हैं उनमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, सराहते रहिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ आगाह करते रहिए कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम, कौन से चेंजेस आप चाहते हैं, क्या देखना आप चाहते हैं। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।
ये जी हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और आज जो कश्मीरियों के साथ यकजहती का एक मुजाहरा हम करने जा रहे हैं और अभी आगे अहवाल हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह। हम सारी दुनिया से ये डिमांड करते हैं कि कश्मीरियों को उनका खुद हक़ जो है वो दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ, कश्मीर जो है वो हमारे दिल का एक हिस्सा है, हमारा वतन है, हमारा खून है वो। हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को इस तरह जुदा नहीं छोड़ सकते। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment.